Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim and I represent the Office of Advancement at LUMS. Thank you very much for joining us today. We are going to be talking about the MS Technology Management and Entrepreneurship program that we're offering through the Sulaiman Daud School of Business at LUMS. And सबसे अच्छी बात इस program की ये कि I have been joined by two guests from the same school, Ms. Sara Pervez and Mr. Badar Khushnood. Sara आप program director हैं MS Technology Management Entrepreneurship program की, and Badar आप executive in residence हैं for the very same program. Thank you very much. आपने time निकाला आज. Thank you for inviting us. It's my pleasure. Sara, we'll start with you. First question, why join the MS TME program? What exact need of the market are we satisfying this program be through? Technology and entrepreneurship have been buzzwords for quite some time. But more than buzzwords, they've become a very integral, functional part of all businesses these days. So if you look at any company, no matter what the size is, no matter what their direction or aim is, technology-driven aspect or some sorts of entrepreneurial drive चाहिए होती है उनको अपने employees से. So this is directly answering the industry demand that has been there for quite some time. And we've picked up on it, I think, earlier than other universities right now at the moment. But we are treating it as a functional element. So when we talk about this master's program, it will give you that functional area knowledge that only comes through your aptitude and interest. So if you're interested in technology related or technology management issues and starting something of your own or creating value on your own, so this program becomes a good fit for you. अच्छा सारा आपने बात की कि we talk about the functional area as well. तो एक traditional master's program से ये कितना different होता है ये वाला program? So हमारा structure different है. We'll talk about that in a bit. It's very differently. Regular master programs are the regular structure जो होता है industry में, so we are very different. But content wise हमने इसको theoretical angle से नहीं pose किया, हमने इसको industry angle से pose किया. तो हमने demand supply खेला है कि what is needed. I'll put a window of at least 3 years maximum. It's going to change after that, maybe earlier, so I'm not sure. But at least the future demand of what technology management would look like, we're trying to address that. So जब मैं इस program को fit करती हूँ in an academic portfolio, I find this very industry driven. So I would say कि सबसे बड़ा इसका differentiating factor इसके structure के बाद, hybrid structure के बाद, इसका industry driven होना है. So we are not right now creating academics in this area. So we are being like industry oriented about it. Very, very industry में जो required हैं चीजें. ओके ठीक है, बिल्कुल सही. अच्छा आपने बात की टेक्नोलॉजी की और आपने एंटरप्रेन्योरशिप की भी थोड़ी सी बात की. बदर आपके पास आते हैं इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. जब भी मैं इस प्रोग्राम का नाम सुनता हूँ, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो देयर आर सेग्रीगेशंस एज वेल. सो व्हाट डज द एंटरप्रेन्योरशिप एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम स्पीक अबाउट? सो अमर, थैंक यू. आई थिंक एक दो तीन चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है. एक, जैसे अभी सारा ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने डिसरप्शन प्रूव कर दी है और कोविड ने उसको सुपर वैलिडेट कर दिया कि टेक. अब देखें, पहले वर्चुअल मीटिंग्स वाज नॉट नॉर्म. अब वर्चुअल मीटिंग्स नॉर्म बनना शुरू हो गई हैं. जूम कॉल्स, जूम वाज नॉट इवन नोन टू मोस्ट ऑफ द ऑडियंस. बहुत सारी चीज़ें नॉर्म बनी. ई कॉमर्स आप देख लें, हर चीज़ ग्रो की है. तो बहुत सारी चीज़ें जो एक तो प्योर टेक है जो कंप्यूटर साइंस वाली साइड चली जाती है. एक अब हर सेक्टर या वर्टिकल या सब्जेक्ट जो है वो अब टेक इनेबल्ड होना शुरू हो गया. अब उसमें भी दो चीज़ें हैं. एक, अगर आप प्योर टेक्नोलॉजी वाली बात देखें, और एक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्टिकल और अ सेक्टर. तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टेक कंपनी, एक नॉन टेक कंपनी, दोनों आपस में बात कर सकें. एक्चुअली दिस इज वेयर आर MS TME प्रोग्राम कम्स इन, कि वो टेक की फ्रीक्वेंसी पे भी बात कर सकते हैं, उनका माइंडसेट भी समझते हैं और वो नॉन टेक को भी समझते हैं और उन दोनों को अलाइन करते हैं. वरना क्या होता है, जो टेक वाले बात करते हैं जी SQL, MySQL, Oracle, and the non-tech one says ROI and other things, and they don't really align, and that's where MS TME connects both of them. और उसके अंदर स्टार्टअप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, स्टार्टअप्स खाली ये आइंस्टाइन और उस लेवल की रिसर्च करने का काम नहीं है. बट अगर आप एक किसी भी चीज़ में 10% से 10x तक सब ला सकते हैं इम्प्रूवमेंट, यू कैन क्रिएट अ स्टार्टअप. सो बहुत सारे स्टार्टअप्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक स्टार्टअप बना और बंद हुआ हमारे इस TME प्रोग्राम के शुरू होने से आज तक में, विच इज एयरलिफ्ट, विच स्टार्टेड ऑफ एंड देन एंडेड एज वेल फॉर ऑल अदर रीजंस. और आप देखें उसने जो कन्वीनियंस का फैक्टर ऐड किया, वो इस वक्त मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हो चुका है दोबारा, बिकॉज एवरीवन वांट्स दैट लेवल ऑफ कन्वीनियंस, बट ट्रेडिशनल प्लेयर्स इन दैट स्पेस आर नॉट येट एबल टू डू दैट. Exactly. And that's where a startup will come in and serve that
पर्पस। और मेरे ख्याल से मार्केट भी एक्सपैंड की जा सकती है। करेक्ट। तो हम इसमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पे बहुत फोकस करते हैं। हम आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ कोर्स every person, every individual has a different distinct kind of a characteristic, बट हमारी कोशिश होती है कि हम वो कोई भी काम करें, चाहे वो अपना काम करें, चाहे वो किसी अच्छे ब्रांड में जाके काम करें या वो किसी SME को सपोर्ट कर रहे हो, उनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल होना ज़रूरी है कि दे शुड थिंक डिफरेंटली, बिकॉज अब रैपिड चेंजेस हो रही हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर हम 2-3 साल पहले वाली अपना देखें जो हमने ये रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो हम देखेंगे जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो तब शायद टिकटॉक इतना रेलिवेंट नहीं था, बट आज टिकटॉक बहुत रेलिवेंट हो गया है। ठीक है, अभी परफेक्ट नहीं है और अभी शायद हम देखते हैं कि वो SEC A में नहीं आया, SEC B और C तक है अभी, और बट इट्स इवॉल्विंग वेरी वेरी रैपिडली, और वो ट्रैफिक बहुत जल्दी गेन कर रहा है, विच मीन्स कि हमारे बिजनेसेस को भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, विच मीन्स दैट्स एग्जैक्टली वेयर आर डिग्री ग्रेजुएट्स कम इन, जो उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो आर पैशनेट इनफ कि वो अपने वहाँ से वो एक आइडिया जनरेट करते हैं और उसको फिर वो एंटरप्रेन्योरली खुद आगे लेके चलना चाहते हैं। तो हम इन दोनों ट्रैक्स को सपोर्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यानी इफ दे गो एंड जॉइन अ ब्रांड और अ कंपनी, उन वहाँ भी वो क्रिएटिवली लेके चल सकें टेक्नोलॉजी और बिजनेस को इकट्ठे, और अगर वो अपना आइडिया उनके पास है तो उसको भी कैसे मैच्योर करें, उसका बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशंस कैसे डिफाइन करें, और उसी में उनको एक मिनी क्रैश कोर्स ऑफ बिजनेस वाली साइड भी सारी मिल जाती है। So it's a very good balance between the current cutting edge techs key updates and also a bit of business as well. Absolutely, बिल्कुल सही। और ख़ुसूसन आपने जो entrepreneurship वाली बात की, इसका मतलब है कि if somebody has an idea that can disrupt the market, this program would also be relevant for them कि भाई आप आओ और करो। Absolutely. And sorry, just to add here, very important, आपने बड़ी अच्छी बात की। बहुत लोगों को आइडिया आता है और उनको उस आइडिया में, फॉर एग्जाम्पल एक वुमन एंटरप्रेन्योर है, उसको शायद अपनी प्रोडक्ट बनवानी आती हो, मगर उनको मार्केटिंग नहीं पता, फाइनेंस नहीं पता, टेक्नोलॉजी नहीं पता, उनको कस्टमर सर्विस नहीं पता। ये सब चीज़ें दिस प्रोग्राम ब्रिंग्स ऑल ऑफ दिस टुगेदर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म and with an aspect of technology integrated. Absolutely. Right, बिल्कुल सही। एंड अगर आप खुद नहीं करना चाहते कुछ चीज़ें तो आपने करवानी कैसे हैं? दैट्स समथिंग यू नीड टू बी इनेबल्ड एज वेल। सो एंटरप्रेन्योर्स सारा कुछ खुद तो नहीं करते, बट कौन सी टीम्स हायर करनी है, कैसे करना है, सो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ दैट पार्ट। अच्छा, ये जो आपने लास्ट वाली बात की, मैं इसको थोड़ा सा सारा के पास आता हूँ, इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। सारा, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की। सो आपने फंक्शनल एरिया की बात की, उसमें जो है आप इक्विप्ड विद स्किल्स, इक्विप्ड विद ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, लेकिन हम ये कहते हैं ये जो प्रोग्राम है ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का है। सो इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी को मैनेज करना भी इसके अंदर सिखा रहे हैं हम। एक्चुअली इसको मैनेज करना ही सिखा रहे हैं हम, बिकॉज टेक्नोलॉजीज का सेट चेंज होता रहेगा और होता रहा है, और अब जिस स्पीड की बदर बात कर रहे थे वो विंडो और शॉर्ट होती जा रही है। सो टेक्नोलॉजीज विल कीप ऑन गोइंग, कमिंग एंड गोइंग एंड बीइंग अपग्रेडेड। आपने उनको स्मार्टली इंटीग्रेट करना है और एफिशिएंटली यूज करना है। सो आई थिंक अगैन it comes down to the skill sets that this program provides, and that skill set is to understand what your needs are, which technology suits those needs, and quickly do the math and move forward. So I again think कि लोग इसमें फंस जाते हैं, the word technology, उनको लगता है शायद कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या कोई बहुत टेक्निकल प्रोग्राम है। नहीं, हम इसमें whatever is available right now इंडस्ट्री में उनकी बात करते हैं, सिखाते ज़रूर हैं in terms of what is the outcome, how can they be used, but we don't get stuck on particular technologies. For us, it's about creating value using whatever's available out there, which should make business sense. So this program is all about technology management. Introduction to technologies, what do they do and how to manage them. That's it. Because this set is going to change very soon. So it's redundant to tell you about specific technologies. मेरा ख्याल है कि हमने जब लास्ट टाइम भी अपने किए 2 साल में, हमने इससे पहले भी पॉडकास्ट वगैरह किया, आई रिमेंबर कि यही वाला पॉइंट हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी तो चेंज हो जाएगी, but when we talk about the skills that are involved in managing those people involved with those technologies, that is what this program is designed to teach. And one thing more, technology is only the catalyst or the enabler. So if you look at it, वो plug and play model है. So technology के बगैर भी businesses होते आए हैं, उनकी speed different थी, efficiency different थी. With technology जो speed और efficiency जिस 10 times की बात करते हैं, उसको समझना, उसको preempt करना, उसे deliver करना एक different ball game है. So this program just makes you smarter and better at managing technologies. Nobody knows कि 5 साल बाद, 8 साल बाद क्या skill set required होगा। हाँ, but another thing that this program will do very quickly is push the status quo जो आपके ideas हैं and quickly make you unlearn and learn. So वो speed कई दफ़ा painful होती है students के लिए, because हम उनको push करते हैं। ये अब आपने बात की ना rigor के program के rigor की बात की है। हाँ, that's required. I feel कि it's very competitive out there.
especially from grad students, we expect that when they come, they should have an open mind towards learning. Whatever they've learned previously, of course, that has some value. But if those things have changed, हम उनको push करेंगे to think differently in a new way. और जो successful students, अभी तक हमारे 3 batches graduate कर चुके हैं. The successful students were those who were willing to go through this painful process of कि हाँ ठीक है, what we knew and what's being done actually are 2 different things. Tell us how it's being done and we're going to learn. So get your hands dirty and come in with a mindset कि ये program आपको challenge करेगा to think differently and to apply yourself to areas which are very new for you, which some people find exciting / challenging. Some people think कि ये नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है. So again, it comes down to the aptitude, why you're applying to this program and what do you want to get from it. अच्छा, अब आपने बात की सारे कि कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स हैं और खुसूसन आपने बात की कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस रिगर को पसंद करते हैं और कुछ नहीं पसंद करते. हम सीधा इस पे बात कर लेते हैं. जब हम प्रोग्राम की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, सो द एडमिशन क्राइटेरिया इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस मास्टर्स प्रोग्राम, यू नीड टू हैव 16 years ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन. फिर उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, एक टेस्ट भी देना होगा, LCAT, GMAT, GRE, NTS CAT को. इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन फिर मुझे पता है कि इंटरव्यू इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स जो कि विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द ओवरऑल एडमिशंस evaluation equation. So what do we really look for in a candidate who is applying specifically for the TME program? So since we don't have any background requirement or any work requirement, so I would say कि अच्छा, कोई भी कर सकते, किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है, कोई इंजीनियर भी आ सकता है. Any level of your career, Right. fresh graduates from any background, you can apply to this program. But since we have an open-ended policy there, we are very particular about your personal statement and the interview. Because these 2 things together tell us these 2 important factors, कि why this program, and if we give you this spot, which is limited number of seats, what would you do with it? So you have to build a story or a narrative to connect the dots for us. Who are you? Where? What was your journey? आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप क्यों अप्लाई करें प्रोग्राम में? और अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. It's a very lean program and LUMS has a reputation to actually manage in the industry. We don't want this to be an in and out program जहाँ पे कोई value add नहीं हो रही और आप भी बाद में जाके उसको कोई खास यूज़ नहीं कर रहे. So हमारा बहुत emphasis होता है कि आप क्यों आना चाहते हैं और क्या करेंगे after graduating. So I would say कि whoever wants to apply, if you put some thought in this and the story is interesting and हमारे लिए एक different stories होती हैं, उनको ज़रूर बुलाते हैं interviews के लिए. But it's your Should be statement. enticing enough कि हम rep कर रहे हैं आपको. Make a solid case Okay. of why you're a good fit and what would you do with this kind of skill set. ठीक है, what Yes, impact if would you have? Very important Right. for us. बिल्कुल सही, में एक बिल्कुल चीज़ मैं सही. ऐड करना जी, चाहूँगा. sure Badar. वो रिगर वेरी ऑनेस्टली एंड कमिंग फ्रॉम वेरी इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, रिगर तब फील होती है जब आप पैशनेट ना हो किसी चीज़ में. इफ़ यू आर रियली फॉर इट, if you really want to change and if you really want to accept the change ki ora and I want to learn the new things and the new tools of the trade, you'll enjoy this actually. Then you won't find it difficult. Absolutely नहीं. Because जो potential इसके candidates हैं वो लोग digital natives हैं, ठीक है. तो उनके लिए तो उनको तो सिर्फ structure एक मिल जाएगा, framework अच्छा मिल जाएगा, and they can actually then put that to use quickly. So just to give you an example, एक non-tech company जो कि products बेचती है retail में, उसको tech e-commerce के बगैर कैसे गुजारा करती है? So they need a bit of tech and that's exactly this program really takes you to that direction. कि हमने कैसे tech को अपने एक non-tech business में लेकर आना है या non-tech idea को tech में के enablement कैसे उसके through करनी है, facilitation कैसे करनी है, but still have some framework, some structure to it ताकि आप उसको तो इसलिए जो रेगर वाली बात थी, मैं आई थिंक इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट व्हाट यू रियली वांट टू डू, आप यू विल बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू एक्सेप्ट दैट रिगर बिकॉज दैट्स व्हाट यू विल एंजॉय. एंड मेरा ख्याल है वही पैशन हमें आपकी एप्लीकेशन भी चाहिए होता है. आई कैन टेल यू दिस डिग्री मूव्स द नीडल इफ यू आर रियली पैशनेट ऑन व्हाट यू वांट टू रियली डू. आई एम क्वाइट श्योर टू नो दैट. The clarity. और एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, बिकॉज जब हम अपने ही इन्हीं बच्चों की प्लेसमेंट और थीसिस वाले प्रोग्राम में जाते हैं जो उनका लास्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो इंडस्ट्री से हमें फीडबैक जो आती है इट्स रियली गुड बिकॉज दीज आर फार मोर प्रिपेयर्ड किड्स आउट इन द मार्केट जिनको टेक और बिजनेस दोनों की चीज समझ अच्छी तरह होती है. वरना मेरा ख्याल है ट्रेडिशनली तो हम एक गैप देखते थे, लर्निंग साइकिल जो है उनका वो बड़ा लंबा हो जाता है. यहाँ दे आर रेडी फॉर द मार्केट, तो टाइम टू मार्केट उनका जो है, टाइम टू रियली गो लाइव इज वेरी वेरी क्विक. ओके So they go to the market and they can, yes.
राइट, आई गेट योर पॉइंट बिल्कुल। अच्छा बदर, आपने इंडस्ट्री की बात की तो थोड़ा सा मैं इसको, अब एम्प्लॉयमेंट इज़ अ ह्यूज कंसर्न, वी कैन टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इज़ अ ह्यूज कंसर्न इन टुडेज मार्केट। जो भी खसूसन ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे होते हैं उनको हमें जॉब मिल जाएगी, और थोड़ा सा हमने स्टार्टअप बूम देखा, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टार्टअप का मैं एग्जैक्टली, हाँ प्लेटफॉर्म है, चलें प्लेटफॉर्म क्या, प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी फैंसी वर्ड से, मगर मैं चलें लेट्स हैव इट। लेकिन आपको इंडिया में फिर भी हमें नज़र आता है कि एक बीपीओ प्रोसेसिंग सारी आउटसोर्सिंग हुई है। हाउ डू यू सी पाकिस्तान मार्केट डेवलपिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ग्लोबली? सो अमार, ग्रेट क्वेश्चन। पहली बात, आई थिंक एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ देखना एक लम्स के इस प्रोग्राम के साथ इज बीइंग वेरी मायोपिक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक दिस प्रोग्राम ब्रॉडन्स योर होराइजन कि एम्प्लॉयमेंट, तो मेरे ख्याल में अगर आपने मार्केट की डिमांड के मुताबिक, जैसे सारा ने कहा कि वी आर मार्केट ड्रिवन, मार्केट की डिमांड के मुताबिक का कोई भी आप प्रोग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिकली देयर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स लाइंग, एंड आई विल गिव यू एक्चुअल एग्जांपल ऑफ दैट। मगर अगर, तो इसलिए वो तो इशू नहीं है कि इफ यू रियली डू दिस वेल, मार्केट इज रेडी फॉर यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयबिलिटी परस्पेक्टिव। बट द बेटर एंड अदर ऑप्शंस आर कि आप अपना खुद इसके बाद यू विल बी इनेबल्ड इनफ कि आप अपना भी कोई काम शुरू कर सकते हैं। एंड आई थिंक यू शुड डू सो, रादर देन जस्ट सीकिंग जॉब्स यू कैन क्रिएट जॉब्स, एंड आई थिंक दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो इस प्रोग्राम की NIC लाहौर के साथ MOUs हैं, वी हैव अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स इन दिस, सो दिस इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। पाशा के साथ MOU है, सो इट्स वेरी वेल नेट विद द राइट इंडस्ट्री प्लेयर्स, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप प्योरली एम्प्लॉयबिलिटी भी देखें तो इस वक्त पाकिस्तान ग्रेजुएट्स अबाउट 25,000 IT एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, 25,000 एनुअली, IT एंड इंजीनियरिंग IT ग्रेजुएट्स। एंड इंजीनियरिंग के ओनली ग्रेजुएट्स पूरे पाकिस्तान में से। इनमें से आपके ख्याल में कितने एम्प्लॉयबल हैं? एम्प्लॉयबल इज ओनली 10%। सिर्फ Only 10%? 2,500-3 हज़ार बच्चा है जो एम्प्लॉयबल है। आई एम नॉट किडिंग, दीज आर एक्चुअल फैक्ट्स, विच मीन्स कि हर साल हम 20,000 बच्चे IT और कंप्यूटर साइंस के और इंजीनियरिंग के हर जगह अक्रू कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड चलते जा रहे हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अभी जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान में 15,000 रजिस्टर्ड IT कंपनीज हैं, 15,000 SECP के डेटा के मुताबिक। एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 6,000 IT कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं। हमने इनमें से सिर्फ 140 का एक सर्वे किया, सिर्फ 140 में 20,000 जॉब्स ओपन है इस वक्त, 20,000 जॉब्स ओपन है 140 में आउट ऑफ द 6,000 जो एक्सपोर्ट करती है। करेक्ट, राइट। वो जो 20,000 जॉब्स ओपन है वो इसलिए ओपन है क्योंकि जो मार्केट में पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है वो मैच नहीं कर रहा जो उनकी डिमांड है। ओके, अच्छा। सिंस वी आर मार्केट ड्रिवन इन दिस प्रोग्राम, ये बच्चे क्विकली, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे कैन क्विकली गेट इनटू द मार्केट वेरी वेल, नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट ग्लोबली एज वेल, बिकॉज जो गूगल, फेसबुक, टिकटॉक दुनिया का है वही हमारा भी पाकिस्तान में है। इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो अगर आप यहाँ से डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट समझ के जाएंगे, वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स और टूल्स वही हैं जो बाहर भी हैं। तो हम फंडामेंटल्स भी आपके क्लियर करते हैं और आपको टूल्स का भी आपको नो हाउ मिलना शुरू हो जाता है इस प्रोग्राम से। सो यू गेट अ हैंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो यू कैन ईजिली लेवरेज दिस टू नॉट ओनली इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी and upgrade yourself there, but also think of your own initiative कि मैं उसको कैसे आइडिया से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन में लेके रास्ता है। तो बट एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी इज इमेंस। बहुत सारे लोगों के लिए एक और इसके बाद अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके बाद फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। दोज हु आर नॉट सेटल्ड इन वन सिटी एंड कीप ऑन हॉपिंग, तो जरूरी नहीं कि उनको कोई फुल टाइम ऑफिस जाने वाली जॉब हो, बट रिमोट या फ्रीलांसिंग, आजकल रिमोट जॉब्स या हाइब्रिड भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। So अच्छा, फ्रीलांसिंग को इतना क्यों समझा जाता है कि अभी भी एज अ करियर नहीं लोग लेते हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स $2.6 बिलियन लास्ट ईयर थी, फाइनेंशियल ईयर में, विच इज नाउ द सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स आफ्टर टेक्सटाइल्स। इस $2.6 बिलियन में से तकरीबन $500 to $600 मिलियन लास्ट ईयर वर अर्नड वाया फ्रीलांसर्स। सो फ्रीलांसिंग इज नॉट बैड, फ्रीलांसिंग इज मोर लाइक ए गिग इकोनॉमी. It's very good as a passive income opportunity or as a backup during times when you're not settled in one city and you're moving or there's some change. वहाँ location या geography does not really matter. Your skill set matters and your knowledge of the industry matters कि आपको कितना काम आता है अपना.
and with AI evolving, I don't know if you're following the chat GPT and how things are Yes, evolving yes, so and I think it's rapidly. being acquired वो by जो सारा बात करें वो छोटा हो गया, वो तो इतना छोटा हो गया, like within a few weeks. right. यानी from launch in November to mid-January, Microsoft offering $10 billion for that tool it's a game changer in that sense. So, and I think that's something which is changing कि employability क्या future क्या होगा. The future of work will be very different. And I think students graduating from this program are more up for that dynamic change, which is never constant in that sense. So they would know better tools, they would know project management, they would know fundamentals of everything, and then they can specialize into anything which they like moving forward. Thank you very much for mentioning those points, और खसूसन the stats that you have shared के जो IT and engineering graduates हैं 25,000, उसमें से 10,000 जो employable हैं, फिर companies हैं जहाँ पे इतनी सारी jobs available हैं, but of course not all of them will get employed क्योंकि जो programs offer किए जा रहे हैं they are not industry driven programs as you mentioned. सारा थोड़ा सा discussion को ज़रा direct दूसरी तरफ करते हैं. Very unusual question I have. Ethics or self-discipline, how important are these two aspects for a student to have to ace in this area? A very important question, Amar, especially for graduate students. मैं undergrad से इतना expect नहीं करूँगी because they're fresh out of school and they're still learning the ropes. But for graduate students, when they come without that drive or that hunger to make a mark or to make a difference and without self-discipline, they're not going to end up anywhere. So even a LUMS degree cannot save you. The brand name cannot save you अगर आप self-discipline. If you lack these two core basic values, hard work and self-discipline. इसमें मैं ethics या honesty को भी डालूंगी, and I think वो self-discipline में built in होता है. But that's very, very important. Mention करना ज़रूरी, honesty is critical. Honesty is very important. देखिए, अब तो हम globally खैर we are connected with alumni and with workplaces, so बातें पहुंच जाती हैं, stories share होती हैं. So I cannot stress the importance of being honest, transparent, and अपना जो भी ethics का code है आपको वो establish करना पड़ेगा graduate school आने से पहले. ये नहीं हो सकता कि हम ethics committee और disciplinary committees के through आपको सिखाएं कि ethics और discipline क्या होता है. So don't have that expectation. We've had previously these instances जहाँ पे हमें लगता है कि students just want to get the admission and then they think कि अब कोई magic हो जाएगा LUMS की degree से जिसमें हमें industry में हमें एक place मिल जाएगी on a throne that we will directly go to. That never happens. And I would say कि undergrad degrees में आप ले सकते हैं likely. पर graduate degree जो कि 1.5 साल की है, which is very lean, जिसमें industry engagement बहुत ज़्यादा है, आपके वैल्यू और एथिक्स का सेट फॉरन पिन पॉइंट हो जाता है कि इसमें इट्स नॉट लेवल हेडेड नहीं है ये बंदा या बंदी. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है पहले दिन से द स्पॉटलाइट इज ऑन यू एंड द पीपल हु शाइन थ्रू आवर प्रोग्राम्स आर द वंस हु हैव दैट सेट ऑफ कॉन्डक्ट एंड एथिक्स दैट इज स्पॉटलेस. सो आई थिंक इफ नथिंग एल्स एवरीथिंग इज ऑन अस. हम आप पे मेहनत भी करेंगे, हम आपको पोजिशन भी करेंगे. यू ब्रिंग हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन एंड एथिक्स टू द टेबल एंड लीव द रेस्ट टू अस. But you cannot expect कि जो basic values हैं ये आपको grad school देगा. That never happens. So I think this is a minimum requirement you should bring to the table. And it's very, very important कि इसके बारे में सोचें and then apply because otherwise it's a very small business world. Word goes around, people know everyone, especially as LUMS alumni, the spotlight will be on you for quite a few years. So this is not something that's going to be, you can work around it. And you will always be custodian of the brand. Always. You will reflect on us. रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर देन यू. और डिजिटल में तो देख ही लिए, मतलब इधर आप कुछ करें उधर डिजिटल पे तो 1 सेकंड में चीज़ आ जाती है. तो आई थिंक सारा ने जैसे कहा वो जो ये क्वालिटीज है, जब आप खास तौर पर जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक्चुअली खाली लम्स के नाम को या डिग्री को यूज़ नहीं आप कर सकते, बल्कि यू नीड टू टेक दैट टू द नेक्स्ट लेवल विद योर एथिक्स एंड विद योर ऑनेस्टी एंड विद योर हार्ड वर्क. तो दिस इज अ LUMS grad. Somebody can say हाँ इसका नज़र आ रहा है ये LUMS है. और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें एथिक्स में कि अंडरस्टैंड करने की कि एजुकेशन भी इवॉल्व कर रही है. मकसद इस प्रोग्राम का आपके अंदर कंटेंट डंप करना नहीं है. इसका मकसद आपको सही डायरेक्शन देना है और इसमें सेल्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है. वी कैन गाइड यू कि ये नए टूल्स हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है, लेट्स से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में भी एक्सपेरिमेंटल है टेक वाली साइड पे, बट अंडरस्टैंडिंग दोज एंड आई सो बट उसमें एथिक्स बड़ी इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये भी बड़ी डिबेट है कि एआई और एथिक्स. सो बिकॉज वो ज़्यादा मॉडलिंग तो ह्यूमंस नहीं, उसमें डेटा डालना है. तो इसलिए आई थिंक जहाँ टेक्नोलॉजी आती है वहाँ एथिक्स की एक्सपेक्टेशन एक एक्स्ट्रा नॉच ऊपर चली जाती.
Because a lot of data is involved, so absolutely privacy is involved. कस्टमर्स का डेटा है, अगर आप हेल्थ केयर वाली साइड पे कहीं भी है तो वहाँ बहुत सारा डेटा आ जाता है. तो इसलिए इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे भी एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स के उनकी एथिक्स, उनका हार्डवर्क, उनकी ऑनेस्टी जो है वो एक नॉच ऊपर होनी चाहिए. दैट्स कोर टू द प्रोग्राम, बिकॉज अदरवाइज तो आई थिंक द मार्केट इज वैसे ही बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, बट दिस डिफरेंशिएट्स यू अ लॉट एज वेल. सर बदर, आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि आपको नजर आया हो कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही एक ग्रेजुएट है, उसके एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से किसी कंपनी को बड़ा लॉस हुआ या उसकी रेपुटेशन खराब हुई? खाली ये लेवल नहीं है, इट गोज टू द साइबर क्राइम लेवल. क्योंकि रिमेंबर, आप जब प्रोग्राम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रोग्राम के कोड का एक्सेस है, दैट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो लोगों ने समझा कि बड़ा आसान है कि मैं यहाँ से कोड उठाऊँ, यूएसपी में कॉपी करूँ, दूसरे अपने घर जाऊँ, उसको रीब्रांड करूँ और लॉन्च कर दूँ अपनी प्रोडक्ट बना के. और ये एक्चुअल केस है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, लाहौर की इंडस्ट्री का. और देन FIA साइबर क्राइम गॉट इन्वॉल्व्ड और फिर वो इट गॉट सॉर्टेड आउट. बट येस, दीज आर ग्लोबल इशूज. एब्सोल्युटली. तो हम इस प्रोग्राम में इन पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स को भी अपने स्टूडेंट्स तक लेकर आते हैं कि टेक्नोलॉजी की, जैसे आपने मैनेजमेंट की बात की, तो दैट्स अ कोर, बट उसके ऊपर जो एक लेयर है, दैट्स अ पॉलिसी एंड एडवोकेसी, और जो रेगुलेटरी पार्ट है, दैट्स ऑल्सो क्रिटिकल. दैट डिटर्मिन्स के मैनेजमेंट कैसे आप कर पाएंगे, बिकॉज लॉज कैसे हैं आपके, लॉज कैसे. और मेरा ख्याल है कि मुझे शायद इसमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है. जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा होगा, आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम ज़रूर गेज करने की कोशिश करेंगे. हाउ ऑनेस्ट यू आर, हाउ एथिकल यू आर, हाउ हार्ड वर्किंग ऑफ एन इंडिविजुअल यू आर, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं. सो मेक श्योर ये भी हमें कम्युनिकेट हो रहा है if you're planning or applying to the program. Sarah, another question while we move towards the ending of the program today. How have we structured the whole program, MS TME? So we've tried to compress it into a very lean degree, which means that we are going to finish off with the coursework in 1 year exactly. So it's 4 plus 4. So fall and spring both semesters would have 4 courses each. One would be the business core semester, and the other semester would be electives in your area, which is Semester would be the business. yes, economics, finance, accounting, and marketing. So we're going to give you the business fundamentals. Then right after the winter break, we're going to take you into electives, which means in technology and entrepreneurship, which areas do we want you to deep dive into and learn about. And then there's a quick short over the summers course on research and data analytics. So, but that does not take the full semester. So that's not counted as a full semester. So 1 year of coursework, then a single course, and then you go directly to your capstone thesis project, which is industry driven. So again, with the structure on weekend classes and hybrid and blended learning models, it's very, very manageable in terms of time constraints and work-life balance. But what you need to keep a laser eye focus on is your time with us is going to be very limited, and you have to maximize that time, and you have to make sure you push us to get maximum efficiency or value for money in that time. Sometimes weekend programs and executive programs derail because they have gaps built in, and then you lose focus. So I would say that be very sure that you can mentally see through at least a year of coursework, and then of course your own self-discipline and drive comes in. I think it becomes all the more manageable if it's a weekends program. ठीक है, Personality type. पर्सनैलिटी टाइप. Personality वैसे भी देखा जाए जनरली हमारे दिमाग में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से होता था कि यू आर वर्किंग इन द मॉर्निंग, यू आर स्टडीइंग इन द इवनिंग इफ यू आर टू गो फॉर एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. नाउ वी हैव मेड इट कंप्लीटली, आइड से कि काफी मैनेजेबल हो गया. आप वीकेंड्स पे काम, अब वीकडेज में काम करें और सिर्फ वीकेंड्स पे आके जो है अपनी एजुकेशन आप कर सकते. सो आल्सो आर सम ऑफ दीज वीकेंड क्लासेस डन ऑनलाइन एंड सम इन पर्सन? Yes, so hybrid/blended learning model. So hybrid would mean that we will let you know before the semester starts at which classes are online and which are on campus. So we've kept best of both worlds of online learning and on-campus learning. So we've kept that as a hybrid. Blended learning would mean that the tools that we use to teach are also going to be some of them are online and some of them are on campus. So we're going to mix it up so that we get comfortable with technology and we maximize the benefits of that. So hopefully they're going to get a good mix of faculty, campus life, students, and friendships and all that. Also forms labs, etc., which they need. And then the comfort with online communication, submissions, that also has to be part of the program. Okay, बिल्कुल सही. अच्छा बदर, आपसे एक क्वेश्चन इसमें करता हूं. हमने बात की भी प्रोग्राम के फॉर्मेट की. So now it's an executive program.
आपका काफ़ी ज़्यादा लिंक रहा है हमेशा से IT सेक्टर के अंदर. So do you think it is manageable for IT professionals कि वो काम करें वीकेंड्स पे, अपने वीकेंड लगाना आसान होगा उनके लिए? आई थिंक एब्सोल्युटली सबके लिए आसान है कि ख़ासतौर पे तो आई थिंक हमारे 2 पोटेंशियल पाइपलाइंस हैं. एक तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी वाले लोग जो बिज़नेस को समझना चाहते हैं, और एक वो बिज़नेस वाले या नॉन टेक वाले लोग जो साइंस आर्ट्स या कुछ और भी पढ़ें कि वो लोग टेक का समझे. तो आई थिंक गेटिंग straight few hours over the weekend really gives you that insight deep dive rather than कि वो जैसा अभी आपने कहा सुबह वो शाम वो, तो आप गियर चेंज करने बार बार माइंड की तरह मुश्किल हो जाता है. तो over the weekend आप करके and then you can actually do your readings part and your some practical part during the week as well at your own convenience. So in that sense it's great hybrid option कि अगर आप दिन को आपको वहाँ लंच ब्रेक लंबी मिलती है कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं, या अगर आपका इवनिंग्स इफ़ यू आर एन इवनिंग पर्सन तो आप उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स और वो चीज़ें कर सकते हैं. एंड बट द वीकेंड्स आई थिंक सारा ने बड़ा अच्छा बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना भी डिजिटल आप हो जाएं, एक जो इन पर्सन वाली आपको फील और जो एक्सपीरियंस है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट एंड देयर इज नथिंग बेटर देन, तो वो फैकल्टी के साथ भी और अपने पेयर स्टूडेंट्स के साथ भी एंड बाकी प्रोग्राम्स के साथ भी विद इन जो लम्स का एक ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस है, आई थिंक वो भी आप. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, नॉट जस्ट बोथ द वर्ल्ड्स, ऑल द वर्ल्ड्स. तो इट्स ग्रेट. सो आई थिंक वीकेंड पे आपके पास ज़रा पीसफुल होते हैं, वन गो में कर लेना. एंड विद द प्रोग्राम बिकमिंग एग्जीक्यूटिव, मेरे ख्याल है वो डिफरेंट इंडस्ट्री से भी लोग आ सकते हैं, प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं, और जो पीयर टू पीयर लर्निंग का जो आपने कहा वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है इस इक्वेशन के अंदर. एब्सोल्युटली. आई थिंक हर लिहाज से it works better for both faculty and students के वो उसको leverage कर सकते हैं. all the best options के offline, online, और actually वो ज़रूरी भी है because जो उसके ethics हैं online teaching और studying के सारा इस बात पे स्माइल दे रही है. तो वो वाले ethics भी बड़े ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है. तो मैं ख्याल है सारा अपने एक्सपीरियंसेस कुछ हुए हैं उसके बेसिस पे. नहीं, एक्चुअली वो जब हमने प्रोग्राम ये शुरू हुआ ना, तो दुनिया में कोविड ने सबको बताया कि देयर इज नो कांस्टेंट एंड वी ऑल हैव टू अडैप्ट टू चेंज. एंड एक्चुअली हमारा प्रोग्राम हाई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग दैट चेंज एंड फाइंडिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. I think that's what we all try to do. Also, I think we're dealing with millennials here. So let's be very honest and very frank here. Millennials are smart. They work around obstacles, around things. So they find shortcuts. So I just want to put this out there कि आप ethical code of conduct रख के उसके बाद फिर करें जो भी आपने shortcuts ढूंढना है. ये नहीं हो सकता कि आपको again देखें, the balance has to stay, and this is where we draw the line online or offline. But no compromise on values. वो तो जो सारा That's quite clear, बिल्कुल. वो बैलेंस है ना, वो उसके ऊपर वाली लेयर है जो बॉटम लाइन है, नो वैल्यू, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यू. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. If I'm not wrong, that's Totally the correct. Totally correct. नहीं, you are not. We're not wrong. Sarah, last question. What are the ways to fund this program? So actually it's very flexible. We have lots of options. We have no interest loans also from LUMS, that if your financial need अगर आप establish कर लें तो भी आपको मिलते हैं. Then we have for women, especially if you make it on merit to any program in graduate school, you get a 50% off waiver on your fee. So that's a big one. And that's our attempt at, inclusivity or equity को establish tech में establish करने के लिए. That's a big step. And then otherwise we have scholarships as well, apart from loans. Merit scholarships भी हैं. हाँ, top 3 to 5% वो आपको website पे से exact number मिल जाएगा. So I think these three are very holistic. So money should not be a factor that you're not applying. You make your case, you make sure that you establish your fit with the program, and then you figure out one way or the other to fund the program for you. Bilkul sahi. So you talked about merit scholarships, 50% scholarship for women, and LUMS interest-free loans as well. And money shouldn't be a factor. If you are absolutely certain कि ये program क्या आपके लिए कर सकता है, you can convince us, then we can definitely support you in your journey at LUMS. Thank you very much, Sarah and Badar, for joining us today. For this podcast, and also if you're planning on applying to the MS Technology Management and Entrepreneurship program, please make sure we're getting your application latest by 11th April. And if there's any confusion regarding this program or anything, please create your application. You can then go and click on the chat tab on the application and converse directly with one of our representatives from the admissions office. And yes, that's pretty much it. Thank you very much. Take good care of yourselves. Allah Hafiz.